प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं पीडीएम में साम्हूं आयल इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे फ़ैसिलनि ते पीडीएम में शामिल जमातुनि खे एतिराज़ आहिनि ऐं वाज़िह तौर ते उहे साम्हूं अचनि पिया। अॼु बि शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इहा ॻाल्हि वाज़िह कई हुई त हुनजे घर में गॾिजाणी थी हुई, जंहिंमें सेनेट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अचण जो पीडीएम पारां फ़ैसिलो कयो हो। डिप्टी चेयरमैन लाइ जेयूआई जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हो, जॾहिं त अपोज़िशन लीडर मुस्लिम लीग नून ॾांहुं अचिणो हो, पर इन सॼे मामले सां पीडीएम खे वाज़िह तौर ते धकु रसियो आहे। कुझु देरि पहिरियां ई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब पारां बि ट्वीट साम्हूं आयो आहे। हुन पारां चयो आहे त हफ़ीज़ शेख खे घर भेड़ो करण में जी कामयाबी पीडीएम ॾांहुं वञे पई ऐं हुननि जी हिकमत अमली जे करे हफ़ीज़ शेख खे खां उहिदो वापसि वरितो वियो आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं पीडीएम जी 26 नुक़ाती एजेंडा, इदारनि जी बालादस्ती, इदारनि जी सियासत में मुदाख़लत ख़तमु करण जे हवाले सां जेके वाइदा दावाऊं थियूं उन ते केतिरो अमल थियो आहे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छो पंहिंजा रस्ता जुदा करण तरफ़ वञे पई, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर ज्ञानचंद साहब। सर वॾी महिरबानी अवांजी जॉइन करण जे लाइ। जेयूआई तरफ़ां मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कियो आहे स्पोक्स पर्सन आहिनि जेयूआई जा मोहतरम जनाब असलम गौरी साहब। असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। असलम साहब मैं शुरुआत आपसे करूंगा, बताइएगा ज़ाहिरी तौर पर जो शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि उनके घर में मुलाकात हुई थी, आप भी मुलाकातों के सिलसिलों में रहे हैं। बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी थी, फिर अपोजिशन लीडर उनका आ गया, अब तक जो मामलात हैं वो नजर नहीं आ रहा कि दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं पीडीएम के हवाले से। बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई धोखा हुआ है पीडीएम के साथ वाज़ेह तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मेरा साहब। असल बात यह है कि पीडीएम के इजलास में यह तय हुआ था कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर 3 होते हैं। तो ये सरबराही इजलास में बात हुई, वहां पर तय नहीं हो सका चेयरमैन के अलावा, चूंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब इनका सीनियर साथी हैं तो उनकी उस सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये बात तय नहीं हो सकी कि डिप्टी चेयरमैन और दूसरा कौन होगा। सिर्फ ये तय हो सका कि चेयरमैन जो चूंकि सीनियरिटी की बुनियाद पे हैं तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हम कबूल करते हैं। इसके बाद एक बाकायदा दोबारा कमेटी बनी और शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब की उसमें सदारत में फिर उनके घर पे एक इजलास हुआ। उस कमेटी का सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए कि डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर कौन होगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि डिप्टी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून को दी जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि डिप्टी चेयरमैन जेयूआई को दी जाए। 5 वोट जेयूआई के हैं। उसके बाद इस स्पेशल कमेटी में जो इजलास हुआ उसमें ये तय हुआ, उस कमेटी में तमाम अराकीन ने तय किया मुत्फिका तौर पर। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बाकायदा तय किया गया कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो जेयूआई का होगा और अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। तो ये तयशुदा बातें हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ये मीडिया पे आ चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। ये सारे मामला किसी एक इजलास में नहीं हुए, टेलीफोन पे नहीं हुए, ये बाकायदा पहले एक इजलास में हुआ। जब ये मामला डिस्प्यूटेड हुआ तो फिर उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई, ऑर्गेनाइज की। फिर उस स्पेशल कमेटी ने ये सारे फैसले किए और फिर उसने बाकायदा अनाउंस किए। तो मेरा ख्याल ये कहना कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ ना, तो मेरा ख्याल पीपीपी भी ये बात नहीं कह रही है और हम भी ये बात नहीं कह रहे। अच्छा, अब गौर साहब अब पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है क्योंकि उनकी सीटें हुकूमत के बाद ज्यादा हैं सेनेट में, इसलिए अपोजिशन लीडर उनका आना चाहिए। तो क्या बाज़ाब्ता तौर पर अब हम समझें कि पीडीएम अलग हो गई और सब जमातें अपनी अलग से सियासत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी जब ये बात कर रही है तो? मेरा ख्याल इस मामले पे बात होगी, पीडीएम के अंदर सरबराही इजलास में बात होगी और हम इंतजार, पीडीएम वाले इंतजार कर रहे हैं इनकी 4 सेंट्रल कमेटी का जो इजलास 4 या 5 अप्रैल को हो रहा है उसके फैसलों की रोशनी में उसके बाद जो नेक्स्ट इजलास होगा सरबराही और उसमें इंशाल्लाह इन सब चीजों पे गौर फौज होगा और पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरी थी वही बात की जाएगी। और हम नहीं चाहते कि इस तरह की बातें आम हो। हम इस इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं, इस इत्तेहाद को लेके चलना चाहते हैं और जेयूआई का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम सब जमातें, और ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की वो सब जमातें जो कौमपरस्त हैं, मजहबी हैं,
या जमहूरियत संघ या सेकुलर मैंडेट जिसको आप कह सकते हैं, वो सब जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। इससे बड़ा इत्तेहाद, इस तरह का इत्तेहाद कभी नहीं बना, कभी मजबूत। ठीक है, वो फिर नताइज क्या देता है वो अभी तक देखना बाकी है। ज्ञान साहब आप ये बड़ी बदकिस्मती होगी, मैंने कहा बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इस इत्तेहाद को किसी की भी वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो तारीख उस पार्टी को माफ नहीं करेगी, चाहे JUI हो। ज्ञानचंद साहब अवां ॿुधाए जो जॾहिं शाहिद खाकन अब्बासी साहब अॼु वाज़े तौर ते ॿुधायो आहे जॾहिं इहे सभु शयूं तयशुदा हुयूं, हिकिड़ो डिस्प्यूटेड मामलो आहे, सेनेट चेयरमैन जो बि अवां पारां अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट सां राब्तो कयो वियो, उनखां पोइ इहे ख़बरूं बि आयूं त शायदि पीपल्स पार्टी इन मामले ते सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लाइ बि वञे। अब जॾहिं इहो मामलो हलंदड़ ई हो त कहिड़ी जल्दबाज़ी हुई जो अपोजिशन लीडर पंहिंजो नामज़द त कयो वियो, पर बाप जा मेंबर खणी नामज़द कयो वियो। मरियम नवाज़ साहिब चई चुकिया अगरि एतिरी ज़रूरत हुई त नवाज़ शरीफ़ साहिब सां राब्तो करे सघिजे हा, त ही सॼे इत्तेहाद खे जेको धकु रसियो आहे उन जो जेका सॼी ज़िमेदारी आहे पीपल्स पार्टी ॾांहुं वञे पई। PDM खे जेको धकु रसियो आहे वो लॉन्ग मार्च जो फैसलो मुलतवी करण, लॉन्ग मार्च के इस्तीफ़ान सां गॾण जे करे रसियो। वो अॻु में असां उन PDM खे बचाइण जे लाइ उन शयुनि खे इन नमूने से हवा न ॾिनी जंहिं नमूने सां ही बाक़ी असांजा दोस्त जेके आहिनि उहो अपोजिशन लीडर वारे मामले खे उछालीनि पिया। तो उन ॾींहं ते ई मामलात जेके आहिनि उहे उलझी पिया हुआ, जंहिं ॾींहं ते हिननि जेका वाज़ह तौर ते असांजे तरफ़ां ऐलान शुदा लॉन्ग मार्च हुई उनखे अपोजिशन जे पार्टी जे तरफ़ां इस्तीफ़ान सां गॾु वियो। सभिनी खे ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ान जे मामले ते ॾाढो सेंसिटिव आहे ऐं पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ान जे हक़ में न आहे। उहा तॾहिं हक़ में न हुई जॾहिं PTI वारनि इस्तीफ़ा मिली हुयूं, उहा तॾहिं हक़ में न हुई जॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ बाइकाट पे कयो इलेक्शन जो, इमरान खान सां गॾिजी बाइकाट पे कयो। उन वक़्त में पीपल्स पार्टी मुखालफ़त कई, मियां साहब खे कन्विंस कयो तव्हां पार्लियामेंटी पॉलिटिक्स में अचो। ऐं जॾहिं इमरान खान ते वेही वियो हो त पीपल्स पार्टी ही चए हिननि खे PTI खे बि कन्विंस कयो तव्हां अचो पार्लियामेंट में, ऐं नून लीग खे बि कन्विंस कयो, सभु उन वक़्त में रचो। बाक़ी हिन वक़्त में हिकिड़ी चिठी वाज़ह पोज़ीशन आहे जेका यूसुफ रज़ा गीलानी भी स्टेटमेंट ॾेई चुको आहे, उनजी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदु आहे। त उनखे जॾहिं अपोजिशन लीडर जो मामलो आयो त यूसुफ रज़ा गीलानी इहा ॻाल्हि कई त कंसेंसस सां थींदो, छाकाणि त कैंडिडेट हो, छाकाणि त कंहिं कंट्रोवर्सी हुन में न। पर ज्ञानचंद साहब अगरि अवां चओ पिया इस्तीफ़ान वारो मामलो त उनजे लाइ त बाज़ाब्ता तौर ते जॾहिं 9 जमातूं राज़ी हुयूं, हिकिड़ी राज़ी न हुई त उनखे वक़्तु ॾिनो वियो PDM पारां, जेको फ़ैसिलो कयो वियो अवां खे उहो फ़ैसिलो बि करिणो आहे पीपल्स पार्टी खे। पर अपोजिशन लीडर जे लाइ त तय थियल हुयो त उहो मुस्लिम लीग नून जो ईंदो। अगरि इहे न हो करिणो, एतिराज़ बि हो त PDM सां ई राब्तो कयो वञे हा, उन ई फोरम ते इहा ॻाल्हि थिए हा, या ॿियनि पार्टियुनि जा माण्हू खणी जमायत इस्लामी सां मिली उन्हनि खे खणी करे अॻिते अचिणो, त उन सां त वाज़े तौर ते जेको हिन वक़्तु सवाल उथनि पिया पीपल्स पार्टी ते उहे दुरुस्त आहिनि। ॾिसो जॾहिं इहो क्वेश्चन डिस्कशन में आयो त तव्हां नून लीग वारनि जा जेके बयानात आहिनि, जिन क़िस्म जी ॿोली ॻाल्हाई वई, उन्हनि इख़्तिलाफ़नि खे अञा अॻिते वधायो ऐं नून लीग मुक़बल तौर ते इन्हनि शयुनि ते कंहिं बि क़िस्म जे ॻाल्हाइण जे लाइ कोऑपरेशन करण लाइ तयारु न थी। नतीजतन इहो ई चवणो हो ऐं असां पंहिंजी पोज़ीशन जेका आहे, जेका असां वटि मौजूदु हुई, उनजे बावजूदि असीं हुनखे छो स्टेटस ॾींदासीं। हा, हिकिड़े उन शख़्स खे हिननि अॻिते आणण ते चाहियो जंहिं शख़्स खे असांखे बि क़ाबिल क़बूल कोन्हे ऐं उनखे के का डिस्कशन न थी रहियूं हुयूं, त नतीजतन हिकिड़ो मरलो उहो आयो जंहिं ते असांखे पंहिंजो फ़ैसिलो वठिणो पियो ऐं उहो अमल थी चुको आहे। हाणे जेकॾहिं PDM आहे, असां चाहियूं था PDM अॻिते हले। PDM हिन उहिदनि जे सिलसिले में न हुई, PDM जो मक़सदु हो त शफ़ाफ़ इलेक्शन थियनि। पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त नून लीग ऐं असांजा ॿिया आदमी जेके जमायतूं आहिनि उहे लॉबिंग करे उन्हनि शयुनि तरफ़ छो नथी वञनि जेके पंजाब में ॾाढी ज़बरदस्त पोज़ीशन आहे, जंहिंमें असां उते जी गवर्नमेंट खे ठाहे था सघूं, उते हू छो नथा अचनि। असां साबित करे ॾेखारियो, जेके फ़ैसिलो हा त सेनेट जे इलेक्शन में साबित करे ॾेखारियो इमरान खान खे क़ौमी असेंबली में शिकस्त आई, ज़ाहिर आहे उते शिकस्त आई, त ॿिए पासे खणी पोइ असां इस्टेब्लिशमेंट जी सपोर्ट चऊं या जेका ॻाल्हि थिए पई उन्हनि जा हुअण बावजूद बि तव्हां हाराए विया न, त ज़ाहिरी तौर ते उहा ई ॻाल्हि PDM करे पई त हाणे असांखे रस्ता बदलाइण। अच्छा, गौरी साहब ॾांहुं मूंखे वञिणो आहे। गौरी साहब, आप बताइएगा, अब जो ज्ञानचंद साहब इस वक्त
بات کر رہے ہیں استعفوں کے حوالے سے کہ لانگ مارچ طے تھا, تیاریاں ہو رہی تھی اور ظاہری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی تیاری کر رہی تھی. یہ بات مختلف پیپلز پارٹی کے رہنما کر چکے ہیں. جب اجلاس ہونا تھا تو اس سے ایک دن پہلے مولانا صاحب نے یہ بات کر دی کہ لانگ مارچ کی استعفوں کے بغیر افادیت نہیں ہوگی. اس بارے میں پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. جو اختلافات ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئے. اب یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں گیان چند بھائی جو کہہ رہے ہیں میرے دوست, میں اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں لگاؤں گا تو میں یہ بھی پوچھوں گا کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے ممبر بنانے کے لیے کون سی پی ڈی ایم سے پوچھ کے آپ نے نامینیٹ کیا تھا, کس پارٹی سے آپ نے پوچھا تھا. اور یہ اس طرح کی باتیں میں اسٹیج پہ نہیں کرنا چاہتا میرے بھائی, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. جب ہم بولیں گے نا تو ہمیں پھر دلائل کے ساتھ بولیں گے. جب تک ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک درمیانہ راستہ رکھنا ہے, ساتھیوں کو ہم نے اجتماعی طور سے اکٹھا رکھنا ہے. اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو بہت سی باتیں ہیں کہ چیئرمین سینٹ بھی اس کو بناتے ہوئے ہمیں کون سا کسی نے پوچھا تھا, بعد میں ہم پہ ٹھوسا گیا یہ فیصلہ. اور دیکھیں ہم نے تعاون کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم سب لوگ اس استعفے دینا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی اکیلی جماعت تھی جو ضمنی الیکشنز میں جانا چاہتی تھی. ہم سب نے اتحاد بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کیا اور ان کی بات کو مانا. اور بعد میں جا کے جو رزلٹ آیا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے دوران آپ کو پتا چلا, آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کا موقف تھا وہ ثابت ہوا اور آج بھی وہ الیکشن بھی متنازع بنا. تو یہ ساری صورتحال تھی. اس کے بعد تو اس قسم کے فیصلے آ جانا. اسلم صاحب تھوڑا سا اس میں یہ بھی آگاہ کیجئے گا, ظاہر ہے اب تو پیپلز پارٹی نے اپنا اپوزیشن لیڈر بھی ان کا آ گیا اور اختلافات سامنے آ رہے ہیں, پر جو حیدری صاحب کو ووٹ کم ملے اور وہی ووٹ ڈپٹی چیئرمین کے لیے حکومتی امیدوار کو زیادہ ملے, پھر وہی ووٹ تھے جنہوں نے نام پر ٹھپا لگایا, تو اس تھیوری کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون تھا اور یہ کیسے ہو گیا؟ طے شدہ باتیں تھیں یا اسکرپٹڈ پورا معاملہ چلا ہے؟ دیکھیں ہم اس پہ باقاعدہ انکوائری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 6 تاریخ کو بلوایا ہے اور 6 تاریخ کے مرکزی مجلس شورا میں ہم نے اپنے قومی اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو بلوایا ہے. ہم ان سے پوری وہاں رپورٹ لیں گے اور اسی طرح پھر اس میں ہمارے جو کامران مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ سینیٹر وہ جو ان کے اپنا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے پولنگ ایجنٹ تھے ان سے بھی ہم رپورٹ لیں گے اور انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. لیکن یہ قابل افسوس بات تو ضرور ہے, اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا, کوئی نہیں کہتا, اس لیے کہ مولوی ہے بیچارہ, مولوی پہ کیا بات کرنی. اور ہمارے تو 5 ووٹ ہر جگہ بیکار ہیں. ہمارے 15 ووٹ قومی اسمبلی میں بھی ہمیں کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی مشورہ کرنے کی کہ بھائی ہم سینٹ کے لیے نامزد کر رہے ہیں. 1 ووٹ کے لیے ہم کہیں پتہ نہیں کس کس کے در پہ پھر رہے ہیں. تو ہمارے پاس بھی 15 ووٹ قومی اسمبلی سے ہمیں بھی اعتماد میں لے لیتے سینیٹر نامزد کرنے سے پہلے کہ بھائی ہم گیلانی صاحب کو بنا رہے ہیں یا کس کو. اس وقت نون لیگ اور دونوں نے محبت میں لیڈیز سیٹ انہوں نے لے لی اور جینٹ سیٹ انہوں نے لے لی اور ہم نے مجبوراً ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا. ہمارے 15 ووٹ تھے. ہم نے پی ڈی ایم بچانے کے لیے ہمیشہ یہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے کہیں بھی کسی بھی اس طرح سے بات نہیں کی جس سے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچے. اور یہ آخر کب تک برداشت ہوگی؟ آخر ہم بھی پارٹی ہیں, ہم بھی لوگ ہیں اور لاکھوں لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں اور ہمیں بھی ان کو جواب دینا ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ 6 تاریخ کو جو ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ہو رہا ہے اس دوران میں ان کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلا ڈیسیژن ہم نے کیا لینا ہے. اچھا گیان جی صاحب آواں بدھائے جو جیکا اسلم صاحب گال کن پیا ظاہرہ پی ڈی ایم راضی نہیں جی ہماں پیریاں پہ بدھائے چکو ضمنی چونڈن میں حصو وٹھن جے لائے پی ڈی ایم راضی نہیں سینیٹ میں پی ڈی ایم میں بیو شامل جماعت راضی نہیں سینیٹ چونڈن میں حصو وٹھن جے لائے کترائی فیصلہ تھیا. پاکستان پیپلز پارٹی طرفاں استعفاؤں بابت پوئی سی فیصلو کرے چکی ہے استعفاؤں ناہن ڈیڑیوں ان بابت واضح طور تے اب پی ڈی ایم کے جسٹ انفارم کयो مختلف فیصلن بابت. اگر ہن وقت پی ڈی ایم چوے پئی تے کیس تائیں یہ ہلندو تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں بین شامل جماعت ان کے صرف انفارم کندی تے اساں ہی فیصلو کرے چھڈیو ہے ऐं तव्हां सभिनी खे बि इन ते राज़ी थियणो आहे. ॾिसो असां अमल सां साबित करे ॾेखारियो आहे त जेके असां फ़ैसिला प्रपोज़ कया मीटिंग जे अॻु उन्हनि फ़ैसिलनि में हुकूमत खे शिकस्त मिली.
उनखां अॻिते ॿ मरहले में असांजो मौक़िफ़ हो त असां पंजाब जी हुकूमत खे पहिरें मरहले में ख़तमु करण जे लाइ अॻिते वधियो ऐं उनखे पार्लियामेंट जे अंदरां ई आउट कयूं। जीअं इमरान ख़ान खे असां नेशनल असेंबली में इहे सम्झो त उन्हनि में आउट कयो या जेका पोज़ीशन हुनखे डेड थिए थो। सियासी मामलात वधंदा ई आहिनि। मौलाना साहबनि खे अहमियत पंहिंजी जॻह ते, पर मौलाना साहब खे PDM जो अॻवान करणु ऐं उन खां पोइ जेके मौलाना साहब जा जीवरी शख़्सियत बि आहे, जिन जा तालुकात बि आहिनि, पर मौलाना साहब खे ख़ुदि ताज़ी इज़त ॾिनी आहे, को शक जी गुंजाइश कोन्हे। पर इहो बि नथो थी सघे त कंसेंसस का तवक़ुउ रखियो वञे त कंसेंसस में मौलाना साहब जी पार्टी जे ख़िलाफ़ हुजे, ॿी के ॿी पार्टी जे ख़िलाफ़ उन्हनि इख़्तिलाफ़नि खे वेही हल करण खां पोइ अॻिते वधी सघिजे थो। जेकॾहिं असांजे चयो थो वञे त भई असां इस्तीफ़ा जे ख़िलाफ़ इहो असांजो अॼु जो मौक़िफ़ न आहे, असां उन ॾींहं खां पार्लियामेंट खे कुझु ॾियण जो मौक़िफ़ कान। पहिरीं भुट्टो साहिब जे वक़्त में असां सलाह कयूं त पार्लियामेंट सियासत में असां केॾी बि सियासी थिए, कुझु बि थिए, पर पार्लियामेंटी प्रोसीजर जेको आहे उन खां ॿाहिरि नथा रहे। ठीक है। उनके ये गंडपति वीर है यकीनन मसला पैदा थींदा, इस्लाम पैदा थींदा ऐं वो काबिल अमल बि पैदा वो छो बिलावल साहब चयो त ही एटम बम आहे, इस्तीफ़ा ॾींदासीं, छो जमा कराई वियूं स्पीकर्स वटि इस्तीफ़ाऊं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां? अगर ख़िलाफ़ हुआ त वाज़े तौर ते पहिरें ॾींहं ते इहो नैरेटिव अचणु घुरिजे हा न। शयूं वाज़े हुयूं त पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा न ॾी ऐं पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा जे हक़ में कान्हे। हा, उनखे असां एतिरो त वेट करे कोन पिए कयो, छाकाणि त उन सां PDM में ॾार कोन आहे। कुझु पार्टियूं सख़्तु ज़ोर ॾेई रहियूं इस्तीफ़ा ॾियण। असांजो हो त इनखे कंहिं अंदाज़ में अॻिते वठी अचे तो अहिड़ो मरहलो आयो त थी सघे मतलब सियासी पॉइंट स्कोरिंग लाइ चई सघिजे थो त इस्तेमाल कयो वियो। पीपल्स पार्टी जो पुरानो मौक़िफ़ है न, तो उनके PDM के मुतहद रखण जे लाइ उन मौक़िफ़ खे असां जोर कोन कयूं, उनखे असां अॻिते वठी अचणो पियो। ठीक है सर, पॉइंट अची वियो। सम्झो कि गवर्नमेंट में वो दम कम कोन्हे जेको लॉन्ग मार्च खे बर्दाश्त करे सघे या जेके असां नो कॉन्फिडेंस मूव आने तो सभे बर्दाश्त करे। असलम साहब आप बताइएगा, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसमें कभी भी ये शामिल नहीं रहा कि पार्लियामेंट को छोड़ा जाए, और पिछली CEC भी ये फैसला कर चुकी है, फिर कुछ दिनों में CEC होने वाली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और ज़ाहिर ज्ञानचंद साहब जिस तरह से बातें बता रहे हैं, इससे लग यही रहा है, तासुर यही मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। सबसे पहले तो आप लोग इतना बजिद क्यों हैं इस्तीफों के मामले पर, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देती तो क्या उसके बगैर भी आगे चला जा सकता है? PDM आगे चलेगी इस्तीफे देकर इस्लामाबाद की तरफ? सर देखिए, ये PDM के इजलासों में तयशुदा बात है कि हम इस्तीफे देंगे, लेकिन ये कहना कि हम इस्तीफे कब देंगे इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, ये PDM में तयशुदा मामला हैं। ये पहले तय हुए थे कि हम जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो इस्तीफे भी देंगे, ये तयशुदा है। बाकी पार्टियां क्यों इस बात से बजिद है? इसीलिए बजिद है ना कि इनका जो हमने हर बात इनकी मानी है। अब हमने यहां तक कहा है कि आप सूबाई असम्बली, ठीक है आपकी हुकूमत है, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफा देते हैं। हमने तो यहां तक भी इनको कहा है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम देखें, जब आप हुकूमत के सामने जाएंगे, आप इतना बड़ा लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे, आप वहां कारकुनों को निकालेंगे, वहां इतना लंबा सफर करेंगे, गिलगित से लोग आएंगे, आपके गवादर से लोग आएंगे, और पता नहीं कहां से दूर दूर से हमारे कारकुन निकल के आते हैं, चमन से आते हैं, चागई से आते हैं। हमारे पिछले लॉन्ग मार्च भी आए, इतने लंबे 3 दिन के सफर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो क्या हम सैर करने वहां जाएंगे या घूम फिर के वापस घरों को आ जाएंगे? हम वहां जिस मकसद किए जा रहे हैं, इस हुकूमत नाअहल, अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला नहीं मानती तो गिराने के लिए जा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला नहीं मानती तो मेरा ख्याल ये फिर PDM के अंदर सरबराही इजलास का फैसला होगा कि PDM क्या फैसला करती है अगला, क्योंकि हम तो हमेशा पीपल्स पार्टी की बात मानते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की भी चाहिए बाकी नौजवानों की बात माने। जब इत्तेहाद में हम होते हैं तो फिर हम लाजमी अपना फैसला दूसरे पे नहीं ठूसते,
اور اگر یہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ سمجھے کہ ہم بڑی پارٹی ہے یا ہمارے پاس بڑے ووٹ ہیں تو چیئرمین سینٹ کا ووٹ لیتے ہوئے تو آپ نے یہ اس وقت تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں ووٹ اس لیے دو کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. اس وقت تو یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بنے تھے, مولانا عبدالغفور حیدری پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بنے تھے, تو اپوزیشن لیڈر بھی پی ڈی ایم کا ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اسلم غوری صاحب, گیانچا صاحب, اوان جی ویڈی مہربانی پروگرام میں جوائن کرنے جلائے. ظاہری طور تے پی ڈی ایم اختلاف واضح طور تے ساموچن پہ استعفان وارے معاملے تے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلو کرنو آہے. پاکستان پیپلز پارٹی جی سی میں فیصلو تھیڑو آہے. نہیں صحیح پروگرام جو وقت پانچ پڑیانی تے پوتو پانچ میزبان میراج حبیب کی دیندا اجازت اللہ نے کے بعد.